हेलो एवरीवन, वेलकम टू किक पाइथन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं नंबर गेसिंग गेम। नंबर गेसिंग गेम इज़ बेसिकली a two-player game in which one is computer and second one is user. Computer has to think of a number and user has to guess it correctly within a given number of chances that can be 2, 4, 6 anything. तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग यूज़र का नेम प्रिंट करेंगे। प्रिंट enter your name. Name is equal to input print welcome name. I am thinking of a number and you have to guess it correctly. So इस लाइन का बेसिकली मतलब यही है कि जब भी कोई यूज़र आएगा उसका नाम प्रिंट होगा, लाइक वेलकम आयरन मैन, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर एंड यू हैव टू गेस इट करेक्टली। और फिर हम लोग रैंडम वेरिएबल का यूज़ करेंगे। नंबर इज इक्वल टू random dot randint and that can be 1 to 20. इस लाइन का बेसिक मतलब यही है कि गिवन नंबर ऑफ अ लिस्ट लाइक 1 to 20 में से कोई भी एक नंबर चूज़ करना, जो कि एक रैंडम वेरिएबल का काम है। उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे रैंडम इंपोर्ट रैंडम। तो हम लोग यूज़र को चांसेस देना चाहेंगे जिससे कि यूज़र गेम को एंजॉय कर सके। चांसेस हम लोग दे सकते हैं 2, 4, 6 एनीथिंग। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का। फॉर गेस टेकिंग इन रेंज 6। हम लोग यहाँ पे यूज़र को 6 चांसेस देंगे। प्रिंट take a guess and for that guess is a number, so we will have integer value for it. Input so now हम लोग यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग टूल्स का, लाइक इफ़, एलिफ, एल्स। हम लोग तीनों डिसीजन मेकिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन to make game more simple we will only use if number is less than guess print it is too high and then we print if number is greater than guess, then we will print it is too low, and then we will use if number is equal to guess, we will print it is correct. It is correct. सो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। So enter your name. As you all know that my name is Iron Man.
Iron Man. Welcome, Iron Man. I am thinking of a number and you have to guess it correctly. Take a guess. That can be 6. It is too low. 9. Oh, it is still too low. 14. Too low. 17. Too high. 15. Oh, I guess it correctly. I won this game. So that is how you can make this game. लेकिन तब क्या होगा जब हम ये गेम लूज़ कर जाते हैं और हम लोगों को नंबर पता करना होगा कि क्या नंबर होगा जो कंप्यूटर ने गेस किया था. उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ नंबर इज़ नॉट इक्वल टू गेस then print the number was for that we will use guess. Number is equal to str number and we will have number here. So इस लाइन का बेसिक मतलब यही है कि जब भी कोई हम लोग गेम लूज़ करते हैं तो हम लोगों को वो नंबर पता करने का मन होता है, तो इस लाइन से हम लोग वो नंबर को निकाल सकते हैं. तो चलिए रन करते हैं इस लाइन को, इस गेम को दोबारा से रन करते हैं. So let's run it once more. Enter your name. My name is Iron Man, as you all know that. Iron Man. Take a guess. That can be 3. Oh, it is too low. Let's try to lose this game to know how this line is working, how these lines are working. It is low. 5 is too low. 8. It is still too low. 2. Yes. So now we get the correct number. The number was 20. Yeah. So that is how you can make the number guessing game. Thank you, Kick community. So we will meet again with a new amazing type video.